we'll be going 2 dishes today, and one is savory and one is sweet. Fudge, we'll be making chocolate fudge, chocolate walnut fudge today, and it is very easy and very quick. Plus you can easily do it at home and relish. So we are making fudge, chocolate fudge. I am using compound. You can use Mode का compound देखना अगर कोई अच्छा है तो dark compound. हाँ दिखा दो. So guys, this is Mode's dark compound. You can use this too. Just a compound name ये दिखा देना. Guys, you are requested to take your diary and pen and note it down. The measurements also. This is Van Houten, and you can use dark compound also. Mode's dark compound also. So I prefer Van Houten as it is better than Mode. So I am taking 250 grams of compound, and we'll be taking 200 ml of Milkmaid. So just chop it down. Chop your compound. You can take chocolate also. You can take half and half also. You can take half pure chocolate, pure couverture. You can take Amul chocolate. Amul chocolate रहता है market में. You can take that. So you can take dairy milk chocolate also. अगर कहीं पर compound नहीं मिलता है तो what all dishes are we doing? Tell the name, I'll pen it. Okay, we are doing chocolate walnut fudge. Choco walnut fudge. And other is pani puri flavored. I don't know. जो मेरे को जानते हैं वो ये जानते हैं कि मेरी डिशेस एकदम नाम जो है हम लोग देन एंड देयर डिसाइड करते हैं. पानी पूरी चाट. पानी पूरी चाट कर सकते हैं. येस, वी कैन नेम इट लाइक पानी पूरी चाट. सो फॉर दैट we'll be doing it with something very special thing. So first of all, what we have to do, we have to take this Nestle Milkmaid, or you can take Amul Mithai Maid, and this is 400 gram. This 400 gram, and I'll be taking half of the tin for this recipe. So I'm adding 200 grams, or you can say 200 ml. Very little difference of this ml and gram thing. Just a half of tin. And start heating it at very low temperature. So I'm just heating it, and ये जब हमारा एक टेम्परेचर जो है बॉइलिंग स्टार्ट होने से पहले I'll be adding a tablespoon of Amul cream into it. It is very rich, believe me. It is yummier than anything. मतलब बच्चों को तो ये इतना अच्छा लगेगा ना, I can't tell you.
स्टरिंग इट. अदरवाइज जो मिल्क मेड एंड इन सब चीज़ की क्या टेंडेंसी रहती है, नीचे एक लेयर आने लगती है, तो वी जस्ट डोंट वांट दैट थिंग. तो स्क्रैच इट एंड जस्ट स्टर इट. You can take homemade milkmaid too. Check out the recipes on internet and try that. You can take that too. You can take Amul mithai made. But don't take reduced milk. You have to take milkmaid वाला consistency एकदम. Reduced milk नहीं लेना है हमें, उससे texture different आएगा, taste भी different आएगा. I'll be using 1 tablespoon of fresh cream, Amul fresh cream. Till when should it be heated? इसको हमने पूरा ऑलमोस्ट बॉईल करना है. अभी जब ये थोड़ा अच्छे से गर्म हो गया है, I'm adding 1 tablespoon of Amul cream into it. अभी it is not boiling hot, but it is somewhere around 70 degrees. Thanks for joining in, Rishi sir. So just add it and Thanks let a it lot. boil. So it is started boiling. हमने इसको पूरा अच्छे से बॉईल होने देना है, बट कीप स्टरिंग. अदरवाइज ये जो नीचे से हमारा एक स्टिक होने लगेगा, वो हमारे फज को ख़राब कर देगा, बिटर कर देगा. तो यू हैव टू कीप स्टरिंग इट. और टेम्परेचर एकदम लो रखा हुआ है मैंने इसका. अपने इंडक्शन का आपने फ्लेम पे रखना है, तो आपने एकदम लो टेम्परेचर पे करना है. सो दिस इज एट पीक ऑफ दिस बॉइलिंग कंसिस्टेंसी. हमारा बिल्कुल आने वाला है. इसका पूरा अच्छे से बबली हो चुका है. एक हमारे को उसका स्मेल भी बहुत अच्छे से आने लगता है. सो आई एम एडिंग माई चॉकलेट. सॉरी, दिस इज नॉट चॉकलेट, दिस इज कंपाउंड. व्हेन देन इंटेंस डार्क कंपाउंड. अब इसको बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज हमारा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. सो इसको Around how long? मैंने उसको गैस से हटा लिया है और इसको बहुत लाइट हैंड से मैं फोल्ड करूँगी. Amount of chocolate? It is 200 grams or 200 ml of Milkmaid and 250 grams of chocolate compound, and we'll be taking walnut as per your choice, as per your liking. आप ज़्यादा कम कुछ भी ले सकते हैं. Just add it like बहुत soft. So guys, we have pinned. बहुत briskly आपने इसको mix नहीं करना है. So can you see the consistency? हमारा जो मिल्कमेड और चॉकलेट एंड अमूल क्रीम का जो एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, वो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आ गई है. How long did you cook? Up to the Milkmaid boiling point. So just take a tray, you can grease it or line it with parchment paper or baking paper. I'm lining it with my baking paper. I'm lining it with my baking paper.
So I'm transferring my this fudge into बटर पेपर यूज कर सकते हैं. Yes, yes, you can use butter paper, you can use baking paper. Thanks a lot, Cheena Didi, for writing out the recipe. 250 gram chocolate and 200 ml Milkmaid. And just spread it. Spread it and press it nicely. So I'm adding my walnuts. You can add in between the, I'm just pressing down some. So you can say handful of walnuts, and what I will be doing is, हमारा ये जो पेपर है इसको मैंने फोल्ड करा, and then again I will be spreading it. Can we make this with white or milk chocolate too? मिल्क चॉकलेट का रेशियो सेम रहेगा, वाइट चॉकलेट का रेशियो डिफरेंट हो जाता है. मिल्क क्रीम भी ऐड की है क्या? सो दिस इज डन. इसको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे. So guys, this video will be saved in Instagram, IGTV, and on Facebook in a video section, so you can watch it anytime. I'm adding some more nuts. So this is done. So just leveling it so that cutting के टाइम पे हमारा ये बहुत अच्छे से. So should I add some rose petals as the festive season is coming? So we can add some rose petals to make it more beautiful. Okay, we'll do garnish afterwards. थोड़ा सा कुछ garnish, थोड़ा सा इसको looks को enhance करने के लिए. So this is done. So our next recipe is so crunchy nachos fruit rubbery, berry balls will be there, gulkan surprise, mango malai tart, crispy apple, kesari milk delight, hazelnut king, gulab shrikhand with a twist. So our next recipe is sweet and savory recipe. How long should be refrigerated? It should be refrigerated ओवरनाइट, लेकिन क्योंकि हमें अभी क्लास में कट करके दिखाना है तो आई विल शो यू विद इन हाफ एन आवर. तो अभी मैंने उसको बजाय के फ्रिज के चिलर के बजाय मैंने उसे फ्रीज़र में रखा है, अपर पार्ट ऑफ द फ्रिज. ओके, सो नेक्स्ट रेसिपी इज, क्या थी हमारी नेक्स्ट रेसिपी, क्या नाम रखा? पानी पूरी चाट. पानी पूरी चाट. सो फॉर दैट वी नीड some savory cookies. Like I have these with me and I'm using that bowl. We'll be using this Apura Pani Puri
spread. पास करके दिखा देना. It is available on Baking Cart, bakingcart.com. You can order from there. And some discounts, some very good discounts are going on. 25% discount is going on right now. Okay. So for this recipe, we need any kind of crispies. You can take potato chips. You can take these kind of salted biscuit, some onion, cucumber, and some boiled potatoes. So this is the second recipe, pani puri chaat. And this is पानी पूरी के लिए हमें क्या बेसिक चाहिए होते हैं, पुदीना चटनी. तो दिस इज पुदीना चटनी. दिस इज नॉट धनिया चटनी, दिस इज पुदीना चटनी, तीखी वाली. So should I measure it and say we can take 2 cups of cookies, whatever salted cookies you guys have. So we'll be adding onion, cucumber, like we do it in bhel puris, and it will be very different than bhel puris. ये जो है ना, ये बहुत कमाल करने वाला है. I'll show you guys इसकी कंसिस्टेंसी. अभी जो है थोड़ा थिक है. So what I'm going to do, I'll microwave it. So we'll be adding some peanuts. Obviously जो हमारा भेलपुरी का रहता है वो ऐड करेंगे हम इसमें. I'll be taking my this mint chutney, which has a lot of tikha masala into it, so that it actually resemble the taste of pani puri. Mouth feel उसी तरीके से रहना चाहिए. We'll be adding some lemon juice. Lemon juice के लिए मेरे को juice चाहिए. Some lemon juice to make it more चटपटा kind of thing. And into this I'll be adding some cream cheese. Cream cheese, I have Delecta one. You can use any of the cream cheese. You can make your homemade cream cheese. So I'm using Delecta cream cheese. So we'll be needing some peanuts. These are roasted peanuts without the skin. So I'm using this Delecta cream cheese. What are you mixing? This is mint chutney, tikhi chutney with lemon juice. I have mixed lemon juice into it, and now I'm adding some cream cheese into it. Microwave में कौन से मोड? Normally microwave किया. I just we just microwave it. Hello Ankit sir, how are you?
Thanks to for make it joining in more live. pliable. बहुत अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी अब आ रही है. So I'll be adding some. This product again, yeah, I can show you. So pin it और अप्यूरा का जो है ना वो पिन कर दे. Apura Pani Puri's premium spread. This is from Fab Essences and Flavors, this company. Right. So this is cream cheese. Sit down, Peter. So I'm just crushing and mixing it so that if there are any lumps, इसको. So this is it. So I just mix my cream cheese with spatula. So if there are any lumps, it will crush down. Now I am adding my this mint chutney into my. So I am just mixing this. New jelly. So instead of cream cheese, अगर आपके पास cream cheese नहीं है and you don't want to purchase it or you are not getting cream cheese around your place, so you can use hung curd to make it something like this sauce or dip, you can say. I'm using this pani puri. So I'm using a spoonful of pani puri. And I just mix my pani puri spread into my this. You can use it as a dip. आप इसको bread sticks के साथ bread पे spread करके you can have it. It is like toast करिए bread को and so I'm using this into my puri chaat, whatever you can say. I'm केक keeping चीज और पानी some पूरी क्रीम aside. चीज सेम है क्या? केक चीज केक्स जो होते हैं वो एक पूरे लेयर्ड केक टाइप में रहते हैं. वो एक डिफरेंट चीज है. और क्या पूछा, क्या चीज? Guys, this is cheesecakes. This you can go and check out our profile for cheesecakes. These are cheesecakes and pani puri spread is this. This is pani puri spread from Apura and that was cream cheese from Delecta company. So these are three different things. Alternate for pani puri spread. No alternate. हेमा दी कोई alternate है? Vandana, you are also live on the Fabulous Foodie group. Oh wow. Hi everyone. So I'm just serving this into my platter. So I'm using this canopy. मैं 2-3 तरीके से सर्व करके बता रही हूँ. So I'm using this canopy. मेरे एक ना उसमें ड्रॉर में oven Is के there a नीचे. saved video of waffles? Yes guys, all our previous classes are available. ऐसे ही फ्री क्लास में कब चीज केक रखोगे? चीज केक तो ऐसे फ्री क्लासेस में नहीं रहेंगे. चीज केक इज अ प्रीमियम डिश गाइस. सो सर एक प्लेट दे देना मेरे को ग्रे कलर. सो I've just taken this pani puri spread into my piping bag and just drizzle it over to making it more delicious. And add some more peanuts and सॉरी ये भी मैंने इसके लिए निकाल के आपको दिखाया है.
सो दिस इज इट। मैंने 2 तरीके के आपको इसमें बता दिए हैं वेरिएशन। यू कैन सर्व इट विद लवाश, यू कैन सर्व इट विद ब्रेड स्टिक्स और सम प्लेन जो हमारे सो दिस इज इट। हम लोग इसको मैंने 2 तरीके से ये डिप के तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो वेजिटेबल हम स्टिक्स का कभी कभार सैलड बनाते हैं, वी कैन यूज़ into with that also, and we can use with nachos, we can use with some savory biscuit, you can say, as a dip with some paneer cubes. So here is my version of this pani puri flavored. So we are done with the recipes. So क्योंकि हमने ये फ्रीज़र में सेट करा था, तो यू कैन सी इट इज ऑल सेट। क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र में रख के सेट किया है, तो इट इज़ ऑल सेट। लेकिन इन जनरल हमें इसे फ्रीज़र में रख के सेट नहीं करना है, हमें इसे फ्रिज में सेट करना है। So I'm just walnut, for making all the squares, you can just clean the edge from all the 4 sides like this. For making all the you can obviously have it, लेकिन मैं आपको एक क्लियर अब हमारे इसके पूरे अच्छे से शार्प एजेस रहेंगे। So make nice curves out of it. सीधा अंदर वाला जो हमारा वॉलनट था, सीधा इनसाइड वॉलनट थे। सो इट इज़ वेरी नटी, वॉलनटी। सो व्हाट वी कैन डू इज, मेरे को देखो 2-4 भी, वी कैन ऐड सम मोर टेक्सचर ओवर इट। सब अप यू so we can add more texture over it, so we can drizzle some very nice spreads. So what you can do is so for making it look एक और step ऊपर nicer, I'm adding some texture to it. Where to store these Apura spreads? Normal At room temperature. temperature. Room temperature. Apura products can be bought from bakingcart.com, which is their website,
You can get 100% stock of Very Fab nice. flavors and Apura flavors from there. सो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी है इसकी. सो आई एम एडिंग ओवर माय these fudges. So this is optional, but it will obviously enhance the flavor of your fudge. Like that. That's it. This is the Pani Puri chaat. And this is walnut fudge with hazelnut spread.